Dear students, we start your paper Advanced Operation Research, in which we take the first topic, mathematical formulation of a linear programming problem. First of all, what is linear programming problem? Linear programming is the one of the most important technique for optimization to develop the field of operation research, and it is an important tool in modern applied mathematics, and also our industries, our factories, big companies are helpless without using this technique. So in today's scenario, it is a very important technique to solve the different type of industrial problems. So mainly this technique is useful when the sources are limited. Then our aim to earn the maximum profit with the condition that the sources are very limited and to minimize the cost. इसमें हमारा दो ही एम है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना और हमारा जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना. तो जब भी कोई इंडस्ट्री ओपन होती है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ओपन द इंडस्ट्री, एम ऑफ दैट इंडस्ट्रियलिस्ट विल बी टू maximize the profit and minimize the cost. So using these things, we take what are the main parts of a linear programming problem. Linear programming problem के main parts क्या हैं? Number one, objective function. Number second, constraints or restrictions. Number third, non-negative restrictions. So what is objective function? सपोज कोई भी लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल्स, दैट इज सपोज z इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस cn(xn). दिस इज कॉल्ड द लीनियर function, that is objective function. Objective function is nothing, the relation between the variables, linear variables, is called objective function. And next, constraints, a set of given conditions which are either in the form of equations or inequalities are called constraints. For example, 2x plus 3y is greater than 6, or x minus y is equal to 5, x plus 6y greater than equal to 8. All these are constraints. So a set of conditions which are either in the form of inequalities or equations are called constraints. Then third, non-negative restrictions means all the variables should be positive. जितने variables हैं वो सारे क्या होने चाहिए? ग्रेटर इक्वल 0. सपोज ये जितने भी हम देख रहे हैं x, y, all r should be ग्रेटर इक्वल 0. तो जब भी हम कोई मॉडल जब फ्रेम करेंगे तो उसमें तीन उसकी कंडीशन होगी. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट्स एंड व्हाट द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस. और एक तरीके से जो लीनियर फंक्शन है उसको ऑप्टिमाइज करना है. ऑप्टिमाइज मीन्स यू हैव टू ऑप्टिमाइज दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑप्टिमाइज करेंगे आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. So we use these three main parts of LPP. We draw a method model. We frame a method model of LPP. So suppose a linear function of the variables x1,
X2 Xn, which states that optimize Z is equal to C1 X1 plus C2 X2 plus Cn Xn, subject to the conditions A11 X1, A12 X2 plus A1n Xn either less than equal or greater than equal or equal. B1 A21 X1 इसमें चलता रहेगा प्लस A2n Xn B2, इसमें चलता रहेगा AM1 X1 AM2 X2 plus plus AMN less than equal, greater than equal or equal. Bn. These are the constants. ये क्या है? Set of conditions which are either in the form of inequalities or equations. And this is the objective function which is to be optimized. Optimized means मैंने बताया या तो maximize करना है या minimize. C1, C2, Cn these are the cost. इनको हम बोलते हैं these are the cost. ठीक है. और जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन एंड नॉन नेगेटिव restrictions which are x1, x2, xn all are greater than equal to 0. कुल मिला के हमें क्या कहा गया है? हमारा जो मॉडल था फाइंड x1, x2, xn for which optimize Z is equal to this, subject to the conditions are these and the non-negative restrictions this. This is the complete mathematical model of any LPP. जब भी कोई LPP होगी तो उसके हम मैथमेटिकल मॉडल को जब हम फ्रेम करेंगे तो सबसे पहले ये कि क्या चीज़ हमें करनी है? फाइंड x1, x2, xn. What is the objective function? This is subject to the conditions. These are non-negative restrictions. ये जब हम कंप्लीट बनाएंगे तो हम कहेंगे this is our mathematical model of a LPP. For example, एक एग्जांपल लें, हम इसको किस तरह से फ्रेम करते हैं. We take one example. A firm manufacturing two types of electric items A and B can make a profit of ₹20 per unit of A. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है? वो एक तो इलेक्ट्रिक टाइप आइटम्स